Hey guys, good morning to all of you. What's up? क्या हाल चाल कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया. Good morning to all of you guys. चलिए, I'll just check in whether we are online, and once we are online, guys, we will start today's lecture. ठीक है? So let me just confirm. सब लोग एक बार जकास बोल दो. Can you hear me? Tell me yes. Can you see me live? चलिए गाइज, एक बार मैं आपके कमेंट्स के लिए अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर देता हूँ एंड देन वील गो अहेड विद दिस लेक्चर टुडे. सो गाइज, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हम लोग ने एक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है एंड चैप्टर नंबर 1 का नाम है अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? टू गुड. चलिए. श्रद्धा, गुड मॉर्निंग. जयश्री, गुड मॉर्निंग. निशा, गुड मॉर्निंग. कोमल, गुड मॉर्निंग. हैनिल, गुड मॉर्निंग. यज्ञश्री, गुड मॉर्निंग. छाया, गुड मॉर्निंग. कोमल, गुड मॉर्निंग. नीरज, गुड मॉर्निंग. शांति, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कोमल, गुड मॉर्निंग. नीरज, एकदम जकास. चलो, बढ़िया. सो गाइज, yesterday we started with this lectures if I am not wrong. एंड गाइज, कल हम लोग ने जब ये लेक्चर स्टार्ट किए तो मैंने आपको थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में बताया कि अकाउंटिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाना, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बनाना. आई होप यू रिमेंबर दिस गाइस. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाने हैं? बिकॉज दैट इज हाउ द बिजनेस कम्युनिकेट्स विद स्टेक होल्डर्स. बिजनेस अपने स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कैसे करेगा? थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड दे शुड ऑल्सो एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. तो गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए देयर शुड बी सम रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड. डू यू अग्री विद दैट वन? और गाइस, ये रूल्स फॉलो करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. अब गाइस, विजय शाह, अरविंद, हाय अरविंद. शान, गुड मॉर्निंग सर. इज दिस इन इंग्लिश सर? शान, दिस लेक्चर्स विल बी इन मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. सो ये लेक्चर्स मिक्स होंगे हिंदी और इंग्लिश के बीच में. गाइस, अब ये रूल्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं. Every country have got their own accounting standards. US has got their own accounting standards. UK have got their own accounting standards. Australia have got their own accounting standards. India also have their own accounting standards. In fact, in India, I would tell you that standards are classified into three things. What are three things that standards are classified into? Hi Prerna, how are you? Shairi wala, too good. Nisha, yes. चलो, सब लोग concentrate करो अभी lecture पे. So guys, if I am not wrong, the standards are classified into three in India. One is known as AS, the second one is known as Ind AS, and third one is known as IFRS. Guys, what am I going to teach you in this lectures? I'm going to teach you accounting standards in this lecture. Guys, ये accounting standards की हम लोग बात करेंगे. तो मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड 7 क्वेश्चन कराने वाला हूँ. व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? What does accounting standard deal with? What are the accounting standard setting process, guys? And the final thing is, what are the advantages of accounting standards? What are disadvantages of accounting standard? And the list of accounting standards. These are the 7 questions that I'm going to do with. Are you exactly clear with that one? उसमें से हम लोग ने first 5 questions कल के lecture में complete कर लिए थे. What are the first 5 questions we have completed in yesterday's lecture? First one, why do we need accounting standards? And guys, I want you to participate in this lecture. Start talking about this lectures fast and furious. Okay? Why do we need accounting standards? Guys, we need accounting standards. Why do we need accounting standards? We need accounting standards because of 5 reasons. Guys, we require transparency. Guys, we require consistency. Guys, we require comparability. We require adequacy. And we require reliability. These are the 5 things why we require an accounting standards. So accounting standards are required so that there is transparency, there is consistency, there is comparability, there is adequacy, and finally there is reliability. Transparency, consistency, comparability, adequacy, and reliability. These are the 5 reasons why we require an accounting standard. I hope you guys are catching this up very well. Absolutely. Fantastic. Guys, second, what are accounting standards? Accounting standards are written documents. What will this document contain?
These documents will contain the policies, these documents will contain the procedure, this will contain the framework, this will contain the regulations, this will contain the rules. So they are written documents which will contain the policies, regulations, rules, framework, procedures that are required to be followed for preparation and presentation of accounting, presentation and preparation of financial statements. Guys, who will provide this written documents? Expert body है जो ये रूल्स बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे. और गाइज ये एक्सपर्ट बॉडी 5 चीज़ों का इंश्योर लेके 5 चीज़ों को लेके ये आगे बढ़ेंगे. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मेघना, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो गाइज ये 5 चीज़ों को वो इंश्योर करेंगे. दे विल इंश्योर द एडिक्वेसी, दे विल इंश्योर द कंसिस्टेंसी, दे विल इंश्योर द कंपेरेबिलिटी, दे विल इंश्योर द रिलायबिलिटी, एंड फाइनली दे विल ऑल्सो इंश्योर समथिंग विच इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. So it will ensure adequacy, consistency, comparability, reliability, and adequacy, and this is known as accounting standards. Guys, एक बार accounting standards हो गए तो next question comes is, now you should be all very clear with this question. Question number 3. What does accounting standard deal with? You tell me guys, what does accounting standard deal with? Accounting standard deals with RMPD. कल मैंने आपको डिटेल में, बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई थी कि guys, accounting standard deals with 4 things. RMPD. What does R stand for? Recognition. What does M stand for? Measurement. What does P stands for? Presentation. And what does D stand for? Disclosures. आप इसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते कि दैट इज नथिंग बट गाइस राहुल मलकान पेन ड्राइव लेक्चर्स, है ना. सो गाइस, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिकग्निशन. रिकग्निशन का मतलब है स्टैंडर्ड, चीज़ों को अकाउंट्स में कब लिखना है, दैट इज नोन एज रिकग्निशन. M stands for measurement. Measurement मतलब चीज़ों को कैसे measure करना है, that is known as measurement. P stands for presentation. That means how the things are going to be presented in the accounts, where they are going to be presented in accounts. Are they going to be presented in P&L? Are they going to be presented in balance sheet? और अगर balance sheet में दिखाना है तो is it a fixed asset? Is it a current asset? That is presentation. And guys, finally, after the presentation, the last thing that we are going to present is known as disclosure. Disclosure means खाली accounts में amounts लिख के फायदा नहीं है. We need to disclose a lot of other information, and that is referred to as disclosures. So guys, RMPD. R stands for recognition, M stands for presentation, P stands for presentation. R stands for recognition, M stands for measurement, P stands for presentation, D stands for disclosure. I guess we are all done with that. Guys, next question that we all faced is, what are accounting standard setting process? First of all, the first question, who sets the accounting standards? ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, is given the responsibility of setting the accounting standards. Perfect. Guys, ICAI will set the accounting standards. ICAI themselves is a huge body, तो उन्होंने एक सब कमेटी बना के रखा है. उस सब कमेटी का नाम है ASB. ASB stands for Accounting Standard Board. So Accounting Standard Board was set up in the year 1977, and they are responsible for setting the standard. What is the procedure they follow for setting the standard? Guys, they follow 8-step process for setting the standard. What is the 8-step process? First, guys, they identify the area in which accounting standard is to be prepared. Now, there's inventory, there's fixed assets, there's provisions, there's contingent liability. These are all the areas where the standards are already set. Now, as world keeps on changing, new and improved things keeps on coming into the market. So, guys, first of all, area define करना बहुत ज़रूरी है. Area define करने के बाद there is something which is known as study group. Study group will involve some, scholars. Study group will involve some people from the industry. Study group will involve some people from Government of India. Study group will involve some industrialist, है ना? Then we'll have to prepare a study group. After preparing the study group, guys, we'll prepare the rough draft. That is a draft. After preparing a draft, we'll circulate the draft and we'll collect the comments and the views on those draft. After collecting the comments and views on the draft, guys, we will kind of, improve the standard and make an exposure draft. Now, people always ask me, what is exposure draft? I'll say exposure draft is nothing but more of a fair version of a draft. That is known as an exposure draft. Exposure draft ke baad, guys, we will have to pass on the comments and take the views once again. After passing on the comments and after passing on the views once again, guys, we'll modify the exposure draft. And once we modify the exposure draft is ready to be issued. So we'll issue the standard.
So 8-step process. Guys, step number 1, area. Step number 2, study group. Step number 3, draft. Step number 4, take comments and views on the draft. Step number 5, prepare an exposure draft. Step number 6, take the comments and views on the exposure draft. Step number 7, we'll have to modify the standard. And step number 8, we'll have to issue the standard. But we need to remember that just issuing the standard does not end the responsibility of ASB, does not end the responsibility of the study group कि हाँ भाई स्टैंडर्ड इश्यू हो गया बस चलो अब धमाल करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा गाइस। स्टैंडर्ड इश्यू होने के बाद भी दुनिया में चेंजेस आते हैं, और ये दुनिया में जो चेंजेस आएंगे ना, दे विल हैव टू कीप ऑन इनकलकेटिंग देम और काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू द स्टैंडर्ड। अब एग्जैक्टली क्लियर। सो स्टैंडर्ड इश्यू होने के बाद भी स्टैंडर्ड मॉडिफाई हो सकता है, स्टैंडर्ड इश्यू होने के बाद भी स्टैंडर्ड रिवाइज हो सकता है। आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल। झकास है, टू गुड गाइज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एडवांटेजेस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने किया था गाइज, एंड दैट इज रिफर्ड टू एज SDC. SDC stands for what? S stands for standardization, that everyone will follow the same system, same standards, that is known as standardization. D stands for disclosure, and C stands for comparability. So what are the advantages of accounting standard? Advantages of accounting standards are S, D, C. S stands for standardization, D stands for disclosure, and C stands for comparability. I hope you all are catching up very well. Guys, question number 6. What are disadvantages of accounting standard? Does accounting standard have disadvantages? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिसएडवांटेजेस है कि नहीं है? सो डिसएडवांटेजेस गाइज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? गाइज, इफ एनीवन कैन आंसर मी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? Disadvantages of accounting standards are DR. If you remember DR, डॉक्टर नहीं है, DR है, खाली डेबिट बोल सकते हो पर डेबिट भी नहीं है. कोमल फैंटास्टिक, जयश्री फैंटास्टिक, नीरव फैंटास्टिक. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट हो गए. डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइज इज DR. D stands for difficulty in making choice. Difficulty in making choice. Now what is this difficulty in making choice? अच्छा, पहले मुझे तुम लोग एक बात बताओ, क्या तुम लोग सब लिख रहे हो ये स्टैंडर्ड मेरे साथ? आर यू राइटिंग दिस स्टैंडर्ड्स अलोंग विद मी? यस और नो? क्लियरली पहले बताओ प्लीज. और नहीं लिख रहे हो तो प्लीज ये सारे स्टैंडर्ड्स लिखो. अब डिफिकल्टी इन मेकिंग अ चॉइस क्या है? गाइस, लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स इन अकाउंट्स. Now, for example, if I talk about depreciation, you should all know there are 3 methods of charging depreciation. First one is SLM, second one is WDV, and third one is known as unit of production method. So guys, now which method to follow? Should we follow SLM? Should we follow WDV? Should we follow unit of production method? That is known as difficulty in making a choice. Standard ने तो बोल दिया भाई 3 मेथड है, फिर स्टैंडर्ड बहुत चुप हो गया, अब अपने को डिसाइड करना पड़ेगा हम क्या करें. तो this is known as difficulty in making a choice. Guys, then comes R. R stands for what? R stands for restrictions. Guys, there are a lot of restrictions in the standard. Accounting standards है ना? Yes, of course, Lucky. Of course. So guys, there is lot of restrictions, lot of restrictions. And क्या है ये सारे restrictions? ये ना बहुत bureaucratic है, ये red tapeism है. ऐसा ही करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा ही होगा. Now guys, but at some cases ना, just following the standard will become wrong. It requires out of the box thinking. It does not require us to stick to that one thing and one place and one shot. So guys, there can be a lot of disadvantages of the standard also. So guys, disadvantages of making a standard is it is difficulty of making a choice, and there can be restriction problems and so on and so forth. I hope you guys are catching this up very well, guys. Too good. Can I go ahead, guys? तो छठा क्वेश्चन था, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? आई विल से डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर DR. एंड क्वेश्चन नंबर 7 गाइस इज नाउ द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. गाइस, कौन से स्टैंडर्ड्स हमको पढ़ने हैं या कौन से स्टैंडर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा? अभी एग्जैक्टली क्लियर. दिस 1 hour of lecture every day ना, दिस 1 hour of lecture every day I am going to teach you a lot of standards. And what are the standards that I am going to teach you? Guys, I am going to teach you desktop. We'll go to Rahul. We'll go to CA Inter.
we'll go to advanced accounts nahi, I'll go to group 1, textbook and introduction to accounting standards. And guys, I'm going to teach you all these standards. यहाँ से चालू करूँगा मैं अपना लिस्ट. And guys, मैं आपको standards पढ़ाऊँगा. यहाँ पे लिख देते हैं. I'll teach you AS1, I'll teach you AS2, I'll teach you AS3, I'll teach you AS4, I'll teach you AS5. Guys, AS6 scrap हो चुका है. Are you exactly clear with that one? तो मैं आपको AS6 नहीं AS7 पढ़ाऊँगा. Guys, AS8 पढ़ने की फिर से ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको AS9 पढ़ाऊँगा. तो I'll teach you guys AS9, then I'll teach you AS10 also, AS11 also. Guys, AS11 is foreign exchange. I hope you all remember. Government grants, investment accounting. Guys, AS12, AS13 भी पढ़ा दूंगा मैं आपको. So I'll teach you AS12, AS13, AS14 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. AS15 employee benefits है. AS15 भी मैं आपको पढ़ा दूंगा. फिर मैं आपको AS16 तो पक्का वाला कराऊंगा गाइज, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट. 17, 18, 19, 20 भी कराऊंगा. सो AS17, AS18 गाइज, AS19, AS20, AS21 प्रैक्टिकल है, सो आई एम नॉट टेकिंग 21, बट आई टेक 22 गाइज. 23 भी करा दूंगा, 24 भी कराऊंगा. AS22, 23 भी प्रैक्टिकल में चला जाएगा, तो 24 करेंगे हम लोग. 25, 26 करेंगे, 25 भी करेंगे, 26 भी करेंगे, और फाइनली गाइज हम लोग AS28 भी कर लेंगे, एंड एक और स्टैंडर्ड कर लेंगे हम लोग, एंड दैट इज AS29. सो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस स्टैंडर्ड्स. AS28, AS29, ये सारे स्टैंडर्ड्स कराऊंगा मैं आपको. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? Do we get this notes also? Yes, Mubin, you will get the notes also. शिवानी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के दोनों के स्टैंडर्ड्स कराऊंगा 101%. चलिए गाइज, व्हाट इज AS1? अगर आपको अभी सारे लोगों को नाम याद है तो मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. एंड दिस इज व्हाट आई डू एवरी डे. एवरी डे स्टार्टिंग में 5 मिनट पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद रखना है. व्हाट इज AS1? गाइज, AS1 इज डिस्क्लोजर ऑफ accounting policy. Guys, AS2 is inventory. Guys, AS3 is cash flow statement. Guys, AS4 बहुत बड़ा standard है. So AS4 is net profit or loss for the period and prior period items. And guys, we will have changes in accounting policy. Changes in accounting policy and guys, changes in estimates. ये भी हमारा यही standard में आ जाएगा. Are we exactly clear with that one? So AS1 is disclosure of accounting policy. AS2 is inventory management. AS3 is cash flow statement. Guys, AS4 guys is contingencies. ये नाम गलत लिख लिया मैंने. ये AS5 है. So guys, AS4 में मैं बोलूँगा is contingencies and events after the balance sheet date. Events after the balance sheet date. Guys, AS5 is net profit or loss for the period. Guys, AS5 is prior period items. We call it as prior period items. PPI practical topics नहीं, prior period items. And guys, changes in accounting policy. ये तीन चीज़ों को लेके हैं. Are we exactly clear with that one? So guys, then you need to remember this now. AS1 to 5 पहले नाम याद रखने की कोशिश करता है. So what is AS1? Disclosure of accounting policies. What is AS2? Inventory valuation. What is AS3? Cash flow statement. What is AS4? Contingencies and events occurring after the balance sheet date. What is AS5? Guys, net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. Guys, what is AS7? Guys, AS7 is construction contracts. Construction contracts. Guys, what is AS9? Guys, AS9 is revenue recognition. AS9 is revenue recognition. Are we exactly clear with that one? Guys, what is AS10? Guys, AS10 is property, plant and equipment. We call it in short as PP. Guys, what is 11? AS11 is, guys, effects of changes in foreign exchange rate. है ना?
Effect of changes in foreign exchange rate, guys, is my AS 11. Guys, what is AS 12? AS 12, we call it as government grants. What is AS 13? AS 13, guys, is investment accounting. Guys, what is AS 14? Is amalgamation. What is AS 15? Guys, AS 15 is employee benefits. Guys, as far as applicability goes, guys, everyone who are doing CA, CS, CMS, सब लोग ये standards कर सकते हैं. Are we exactly clear with that one? Guys, what is AS 16? AS 16 is borrowing cost. फिलहाल जो लोग CA कर रहे हैं उनके लिए ये standards, guys, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. बट जो मॉडिफाइड कोर्स है, जो न्यू कोर्स अप्लीकेबल होने वाला है बहुत जल्दी, आई डोंट नो व्हेन, बट जब भी न्यू कोर्स अप्लीकेबल होगा तो गाइज ये न्यू कोर्स में ये सारे स्टैंडर्ड्स एक ही सब्जेक्ट में आ जाएंगे. गाइज, व्हाट इज AS 17? गाइज, AS 17 इज सेगमेंट रिपोर्टिंग. AS 17 is segment reporting. Guys, what is AS 18? Guys, AS 18 is related party agreements. Related party agreement. Guys, what is AS 19? AS 19 is my favorite. AS 19 is lease. AS 20 is, guys, EPS, earning per share. Guys, AS 22. Guys, AS 22 accounting for taxes on income. Accounting for taxes on income. ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए. गाइस, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, बहुत ही छोटू सा स्टैंडर्ड है. सो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. गाइस, व्हाट इज AS 25? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFR बोलते हैं हम लोग इसे. गाइस, AS 26 इज इंटैंजिबल एसेट्स. Intangible assets. Guys, AS 28 is impairment of assets. AS 28 is impairment of assets. And guys, AS 29 is basically what we call it as provisions. Provisions के बाद इसमें और दो तीन चीज़ें हैं, contingent asset and contingent liability. ये मेरा बहुत ही फेवरेट सा स्टैंडर्ड हो रखा है. So guys, ये सारे स्टैंडर्ड हम लोग को करना है. अगर मैं इसकी नंबर्स की बात करूं, देन आई एम गोइंग टू डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 and 11 22 23 स्टैंडर्ड्स में आपको ये लेक्चर्स में कराने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डू 23 स्टैंडर्ड्स गाइस. अभी एग्जैक्टली क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. 23 स्टैंडर्ड्स. जकास बोल दो आप सब लोग एक बार. AS1, disclosure of accounting policy. AS2, inventory. AS3, cash flow statement. AS4, contingencies and events occurring after the balance sheet date. AS4, 5, net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. AS7, construction contracts. AS9, revenue recognition. Guys, AS10 is property, plant and equipment. AS11 is effect of changes in foreign exchange rate. AS12 is government grants. AS13 is investment accounting. AS15 is employee benefits. AS16, guys, is borrowing cost. AS17 is segment reporting. AS18 is related party agreements. AS19, guys, is lease. AS20 is EPS. AS22 is accounting for taxes on income. AS24 is discontinuing operations. AS25 is interim financial reporting. Guys, AS26 is intangible assets. AS28 is impairment of assets. And AS29 is provisions, contingent asset and contingent liability. अभी एग्जैक्टली क्लियर? रोज पहले ये भजन गाना है और ये भजन गाते 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 हमें आगे जाना है. गाइज, आज पहले AS1 to AS5 रिमेंबर रखो. आई होप आप सब लोग ऐसे आंख बंद करके AS1 to AS5 मेरे साथ बोल सको. व्हाट इज AS1? गाइज, AS1 is disclosure of accounting policy. AS2 is inventory valuation. AS3 is cash flow statement. AS4 is contingencies and events occurring after the balance sheet. And guys, AS5 is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. AS1, guys, बिना देखे, AS1 is disclosure of accounting policy. AS2, inventory valuation. AS3, cash flow statement. AS4, contingency and events occurring after the balance sheet date. And AS5 is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. Tell me, are you catching this up very, very well? Yes or no? Yes or no? Too good. जकास है. चलिए, बढ़िया. तो गाइस, ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन एज टू व्हाट आर दी अकाउंटिंग पॉलिसी. अब फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए. गाइस, डू यू रिमेंबर ऑल द 7 क्वेश्चंस वेरी वेल? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
Why do we need accounting standards, guys? We need accounting standards for transparency, for consistency, for comparability, for adequacy, and for reliability. What are accounting standards? They are policy documents. They are written documents which provides you policies, which provides you framework, which provides you procedures, which provides you rules, which provides you regulations that should be used for the preparation and presentation of financial statements. Who provides this written documents? Expert body provides this documents, and they ensure the transparency, the consistency, the comparability, the reliability, and the adequacy. Next one, what does accounting standard deal with? Accounting standard deals with RMPD. R stands for recognition, M stands for measurement, P stands for presentation, and D stands for disclosure. Guys, what is accounting standard setting process? ICAI has set up a body which is known as ASB, Accounting Standard Board, in the year 1977, and they are responsible for creation of accounting standards. Now, when they create an accounting standard, they follow the procedure. The procedure is 8 steps. First of all, they identify the area, then they form the study group. Area ke baad, study group ke baad, guys, the third thing that comes into their mind is to formulate a draft. Then this draft is circulated and taken the comments. Then we prepare an exposure draft, and again comments and views are taken. Then the standard is modified, and then the standard is issued. Once the standard is issued, guys, it does not stop there. We still have to go and keep a check on the environment, keep a check on the systems, and we have to keep on modifying those standards again. Next one, what are advantages of accounting standard? Advantages of accounting standard is SDC. S stands for standardization, D stands for disclosure, and C stands for comparability. What are disadvantages of accounting standard? Disadvantages of accounting standard are D. D stands for difficulty in making a choice, and R, they are very restrictive in nature. Next one, question number 7. What are the list of accounting standards? Guys, there are 23 standards that will be taken up, but we will go for 1 to 5 today. AS1 is disclosure of accounting policy. AS2 is inventory valuation. AS3 is cash flow statement. Guys, AS4 is contingency and events occurring after the balance sheet date, and AS5 is net profit or loss for the period, prior period items, and changes in accounting policies. Tell me you got this very well. Too good? Chalo guys, आगे जाता है. Is question number 4, question number 5 हो गया, question number 6 हो गया. तो guys, अगर हो सके तो नया पेज लेना और वहां पे नए पेज पे तुम टाइटल लिखो चैप्टर नंबर 2. दिस इज माय चैप्टर नंबर 1 एंड गाइस आई वांट यू टू गो टू चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 क्यों जरूरी है? चैप्टर नंबर 2 गाइस इज इंट्रोडक्शन टू Ind AS. Now guys, let me tell you very good fact that India is the only country जहां पे दो स्टैंडर्ड्स है. इंडिया के रिलेशन में दो स्टैंडर्ड्स है. और कौन से दो स्टैंडर्ड्स है गाइस? वन इज AS एंड सेकंड वन इज Ind AS. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि इंडिया को AS और Ind AS दो स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया को जरूरत AS और Ind AS बनाने की जरूरत? तो गाइस, अब हम लोग जाते हैं, इसको नीचे करते हैं एंड आई विल पिक अप दिस फाइन. गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई Ind AS? सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन चालू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई Ind AS. Ind AS बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब AS थे तो Ind AS की क्या जरूरत पड़ी? एंड सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आंसर आना चाहिए कि गाइस, Ind AS है तो क्या AS बंद हो गया? So if you have started following Ind AS, have we shut off AS? Is this the right way to do it? Have we done that? Answer is no. तो हमारे कंट्री में AS भी चलेंगे और हमारे कंट्री में Ind AS भी चलेंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर? तो पहला क्वेश्चन था why Ind AS. क्वेश्चन नंबर 2 guys, what are Ind AS? What are Ind AS? Are we exactly clear with that one? So why Ind AS? Question number 2 is what are Ind AS? This is my question number 2. Guys, question number 3 now is, ऊपर से सारे क्वेश्चन लेता हूँ. So why Ind AS? What are Ind AS? Guys, then question number 3 comes, international standards के बारे में आपको पता है कि नहीं? So guys, यहाँ पे आ जाता है कि international standards कौन से थे? If you remember the international standards, the so called IFRS नाम के standards थे. Guys, question number 4 आ जाता है, what is something which is known as Carve-in and Carve-out? ये आ जाता है हमारा question number 4. Guys, question number 5 आ जाता है, what are benefits of Indian accounting standards? What are benefits of
Ind AS एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारा यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स Ind AS, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू Ind AS. Are we exactly clear with that one? गाइस मेरे गोल्स और मेरे एम्बिशंस तो बहुत ही बड़े होते हैं, तो मेरा गोल और एम्बिशन ये है कि एक बार मैं पूरा AS सिखा दूँ ना आपको, उसके बाद मैं आपको पूरा Ind AS सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ. यही 1 hour a day, 1 hour a day, every day I'm going to teach you something very free. I hope you appreciate that. I hope that you just keep on passing this information to a lot of people possible. ठीक है ना? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू Ind AS से चालू करते हैं. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि वाई Ind AS. क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, एंड दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई Ind AS. वाई डू वी रिक्वायर समथिंग दैट इज नोन एज Ind AS? क्यों जरूरत पड़ेगी हमें Ind AS की? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट गाइस? अब इंडिया था, हमारे पास AS तो था ही, तो Ind AS की जरूरत क्यों पड़ी? तो गाइस बहुत सिंपल सा रीजन है. नाउ एज आई टोल्ड यू गाइस कि देयर इज अ वर्ल्ड, और वर्ल्ड में गाइस वी हैव US जो अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करता था, UK जो अपने स्टैंडर्ड फॉलो करता था, ऑस्ट्रेलिया जो अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करता था. गाइस सब लोग अपने 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 स्टैंडर्ड फॉलो करते थे. देयर इज इंडिया जो खुद अपने स्टैंडर्ड फॉलो करता था. अभी एग्जैक्टली क्लियर, वी हैव ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, वी हैव इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वी हैव UK के स्टैंडर्ड्स अलग, US के स्टैंडर्ड्स अलग. एवरीबडी आर फॉलोइंग सम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. डू यू एग्री विद दैट वन? बट you know, when we started with the 21st century, in fact way back also, the trade was expanding. There was imports, there was exports, every country was communicating with one another, every company in the country was doing business with the company from another country. So guys, there was globalization, there was liberalization, there was, the whole world started becoming like one country. So guys, एक global standards की जरूरत थी, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत थी, और वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे थे गाइस IFRS के नाम से, या आई वुड रादर से IAS के नाम से. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बन रहे थे, एंड दैट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वे रिफर्ड टू एज IFRS, दैट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वे रिफर्ड टू एज IAS. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. अरुण, गुड मॉर्निंग. And this global standards which is referred to as IFRS, this global standards which is referred to as IAS, guys ये बन रहे थे. But what happened? Guys, there was a dilemma. Dilemma मतलब एक sort of confusion था, एक sort of question था कि क्या हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. तो बाद में हमने सोचा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तो फॉलो कर लेंगे, बट अगर उसे पूरा फॉलो कर लेंगे ना, तो गाइस देयर आर सम गुड थिंग्स इन दैट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, एंड डेफिनेटली देयर आर सम बैड थिंग्स इन द ग्लोबल स्टैंडर्ड एज ऑल. तो गाइस वी हैव टू बी वेरी प्रूडेंट, वी हैव टू बी वेरी जस्टिफाइबल, और प्रूडेंस और जस्टिफाइबल के रेंज में रह के गाइस हमें बेसिकली, मैं बात क्या कर रहा हूँ पता है, कि दुनिया से अगर कोई चीज़ कॉपी करनी है तो भाई वो अच्छी चीज़ कॉपी कर लेते हैं. तो वी शुड कॉपी द गुड थिंग्स एंड वी शुड नॉट कॉपी द बैड थिंग्स. तो हमने क्या सोचा कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट तो करेंगे, बट वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जो हमारे कल्चर को, हमारे सिस्टम को जो चीज़ें सूट नहीं होती है, which is not adaptable, which is not according to our culture, which is not according to our system, guys, all those things should not be adopted. And therefore we thought ki no, we will not adopt blindly IFRS, we will not blindly adopt IAS, and what will we do is we'll modify those IFRS, we'll modify those IAS, and we will come out with our own international standards. And that is why basically it was referred to as Ind AS. Are we exactly clear with that one? So question अगर कोई पूछे ना कि why Ind AS, so guys question का why Ind AS is, in the present era the globalization and liberalization world is becoming one economic village. So guys, due to globalization, guys, due to liberalization, आई होप यू गाइज आर राइटिंग दिस. मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आप ये ग्रंथ बना रहे हो, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है. दिस इज लाइक अ ग्रंथ.
due to globalization, due to liberalization, guys, world is becoming single country और single economic village बोल देता हूं मैं. Are we exactly clear with that one? Due to globalization and due to liberalization, the world is becoming a single economic village. Are we exactly clear with that one? Guys, due to this, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था. Should we adopt IFRS? Should we adopt IFRS? This is the question that we were facing. कि क्या हमें IFRS adopt कर लेना चाहिए, पूरे का पूरा IFRS adopt कर लेना चाहिए? नहीं. So guys, we decided to converge IFRS. What we decided, guys? We decided to converge IFRS and form our own standards. We decided to converge IFRS and form our own standards. Own international standards. Own international standards. हमारे खुद के इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हम लोग ने बनाने की कोशिश की. और गाइस यहीं पे इन्वेंशन हुआ है हमारे Ind AS का. Are we exactly clear with that one? So guys, we have got something which is known as AS and we have also got something which is known as Ind AS. I hope you are very, very clear. So what is Ind AS? Guys, there was globalization, guys, there was liberalization, and world was becoming one economic village. And due to world becoming one economic village, guys, we decided that we adopt IFRS, but then we decided no, हम IFRS adopt नहीं करेंगे, हम IFRS को converge करेंगे. हम IFRS की सारी अच्छी चीज़ों को ले लेंगे और उसे कन्वर्ज करके हम अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाएंगे एंड दे आर नोन एज Ind AS. टेल मी yes or no. टेल मी चकास गाइस. टेल मी दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस ब्यूटिफुली. मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए कि गाइस वाई Ind AS. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर Ind AS? सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बहुत ही सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था वाई Ind AS. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होना चाहिए व्हाट आर Ind AS. सो गाइस व्हाट आर Ind AS? गाइस सिंपल है. अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट आर Ind AS तो मैं ऐसे बोलता हूं गाइस, इट इज IFRS converged standards. IAS IFRS converged standards. Are we exactly clear with that one? अब पक्का. Who issues? Guys, again issued by ASB of ICAI. They are also issued by ASB of ICAI. Are we exactly clear with that one? So guys, कोई अपने को पूछे Ind AS क्या है तो Ind AS definitely they are written documents. They will contain the policies, the procedures, the regulations, the rules, the framework. But guys, this time we did not create them. ASB ने खुद बैठ के ये सब कुछ नहीं बनाया. स्टडी ग्रुप बनाया, ये किया वो किया, नहीं ये नहीं किया. ASB ने क्या किया, IFRS लिया, उसे पढ़ा, देखा भाई देखो इसमें से ये चीज़ें हमें अच्छी लग रही है तो ये चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली. अच्छा भाई ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही तो ये चीज़ें हमने रिजेक्ट कर दी. और गाइज हमने एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स इश्यू कर दिए जिसका नाम है Ind AS. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? क्या भाई कमेंट सेक्शन में एकदम ठंडे से पढ़ रहे हो? सब लोग जकास तो बोलो एक बार. सो गाइज दैट इज नोन एज Ind AS. IAS IFRS converged standards issued by ASB of ICAI. चलो गाइज आगे जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर IFRS? व्हाट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? जहां से हम कॉपी करते हैं, ये स्टैंडर्ड्स कहां से बने? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहां से बने? सो आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन इज व्हाट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? सो गाइस द ईयर वाज, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3. गाइस द ईयर वाज 1973. गाइस IASC, that is International Accounting Standard Committee. International Accounting Standard Committee, IASC.
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। कब बनी थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी? गाइस ईयर 1973 में बनी थी और इन्होंने इश्यू करना चालू किए IAS और इन्होंने इश्यू करना चालू किए SIC। व्हाट इज IAS? गाइस IAS आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करना चालू किए। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? But guys, the standards were like laws. The language of the standards, the language of this international accounting standard was so tough, was so difficult that interpreting those standards was very problematic. बहुत बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा था। अब लोगों ने कहा अरे भाई ये टफ लैंग्वेज है, ये हमें टफ लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती है, तो क्या करें भाई? अगर ये टफ लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती तो क्या करें? तो स्टैंडर्ड ने कहा मत डरो, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, आप SIC इश्यू कर सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज नोन एज कि स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट कैसे करा जाए। सो इट वाज स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन कमिटी। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? So guys, there was something which is known as international accounting standards, और international accounting standards को interpret करने के लिए, easy language में लिखने के लिए, ताकि हमें समझ पाए, normal layman को समझ पाए, everyone understands that, guys, they started issuing SIC also। और कब हो रहा था ये ग्लोबल लेवल पे ये काम? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कब से इश्यू होने चालू हो गए थे? 1973 में there was a committee which was set up that was known as International Accounting Standard Setting Committee। जगास है? Too good, guys। Then in the year we modified them, changed the names, changed the regulations, guys। In the year 2001 we changed the name from IASC to IASB। Now what was IASB, guys? IASB was International Accounting Standard Board। हमने नाम चेंज कर दिया, हमने ISSC का नाम चेंज करके IASB कर दिया, सिर्फ नाम बदला है। 1973 में किसको सेट किया था इंटरनेशनल लेवल पे? IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने क्या क्या इश्यू किए थे? दो चीज, वन IAS एंड सेकेंड वन SIC। सॉरी गाइज, IAS क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। SIC क्या था? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। एंड इन 2001 वी चेंज द नेम ऑफ IASC एंड वी कन्वर्टेड इट टू IASB। IASB का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बनाया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने IFRS बनाए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने IFRS बनाया। So guys, we made IFRS and guys then they made IFRIC भी बनाया। What is IFRS? It is International Financial Reporting, International Financial Reporting Standards बनाए। एंड गाइज इस स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज टफ थी, इसीलिए हम लोग ने IFRIC बनाया ना। व्हाट वाज IFRIC, गाइज? IFRIC वाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी। Are we exactly clear with that one? Tell me, yes or no? And guys, together, all this four together, अगर कोई अपने को पूछे ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो पीपल स्लैंग लैंग्वेज में बोल देते इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। गाइस नहीं, अगर हम लोग को कोई पूछेंगे ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो गाइस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल इंक्लूड फोर थिंग्स। विल इंक्लूड IAS, guys will include SIC, guys will include IFRS, and guys will include IFRIC. All these four things, guys, will together be referred to as something which is known as international standards.
International standard does not only include IFRS. International standard includes IS. International standard includes SIC. International standard includes IFRS, and international standard also including IFRIC. Guys, अगर मैं आपको बताऊँ ना, so मुंबई में I do take face-to-face classes for this IFRS. There's something which is known as IFRS diploma करके कोर्स आता है जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद करते हैं, IFRS डिप्लोमा. अब गाइज ये IFRS डिप्लोमा में लोगों को ये 4 चीज़ें पढ़नी पड़ती है. दे हैव टू स्टडी IS, दे हैव टू स्टडी SIC, दे हैव टू स्टडी IFRS एंड दे हैव टू स्टडी IFRIC ऑल्सो. अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? पक्का, कोई डाउट नहीं है? टू गुड. चलिए, कैन आई गो अहेड? कैन आई टेक दिस अहेड इफ यू ऑल आर रेडी? एक बार जकास बोल दो सब लोग. सो डू यू नो द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फॉर टुडे? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे? क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता चला कि इंड एस की क्यों जरूरत पड़ी. इंड एस की इसीलिए ज़रूरत पड़ी बिकॉज ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बन रहे थे, बट हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जेरोक्स कॉपी नहीं मारना चाहते थे. हम अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे और इसीलिए हमारे आइडेंटिटी क्रिएट करने की वजह से हमने इंड एस बनाया. कोई हमें पूछे कि व्हाट आर इंड एस, तो उन्हें बोलना है कि इंड एस आर नथिंग बट IFRS कन्वर्ट स्टैंडर्ड्स एंड दे आर इशूड बाय नन अदर देन ASB ऑफ ICWA. थर्ड वन, व्हाट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कोई बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है IFRS, बट इट इज़ नॉट ओनली IFRS. कहानी चालू हुई थी ईयर 1973 में. 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी सेट हुई थी. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने IAS बनाए थे, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे. उसको सिंप्लीफाई करने के दे इशूड SIC. SIC स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी. गाइस, देन द ईयर केम टू 2001 एंड 2001 में IASC was now converted into IASB. IASB का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए IFRS एंड IFRIC. IFRS stands for International Financial Reporting Standards and IFRIC stands for International Financial Reporting Interpretation Committee. So together, if somebody tells me what are international standards, I do tell them that international standard includes 4 things. 1, international standard includes IS, international standard includes SIC, international standard includes IFRS, and international standard includes IFRIC. So 1, 2, 3, 4 of these things are included in international standards. Guys, I'll go to question number 4. Now, what is my question number 4? My question number 4, guys, is what is carve-in and carve-out? What is carve-in and carve-out? Have you heard about the word carve-in and carve-out? आप आगे चल के बहुत सुनेंगे इस वर्ड्स को, carve-in and carve-out. तो हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे हमने रखे IS और यहाँ पे हमने रखे IFRS और गाइस इसको कन्वर्ज किया और कन्वर्ज करने के बाद, कन्वर्ज मतलब चेंजेस किए, हमें मिला Ind AS. Do you agree with that one? Tell me, guys, are you catching this up very well? So we had the carve-in and we had the carve-out. So guys, IAS और IFRS को हमने यहाँ पे रखा. इसे कन्वर्ज करना मतलब चेंजेस करना, Ind AS बनाया. अब गाइज ये थी हमारी टेक्स्ट. किसकी टेक्स्ट थी ये? Ind AS और IFRS की टेक्स्ट थी. Got this? अब गाइज ये लाइन हमें अच्छी लगी, कॉपी कर ली. अब ये सेकेंड वाली लाइन हमें अच्छी नहीं लगी तो ये हमने नहीं कॉपी की. गाइज ये थर्ड लाइन हमने कॉपी कर ली, ये फोर्थ लाइन भी हमने कॉपी कर ली, फिफ्थ लाइन भी कॉपी कर ली, सिक्स्थ लाइन भी कॉपी कर ली. गाइज फिर से हमें एक ये लाइन अच्छी नहीं लगी तो ये हमने कॉपी नहीं की. सो गाइज ये जो लाइन हमने कॉपी नहीं की आर बेसिकली रिफर्ड टू एज कार्व आउट. दिस इज बेसिकली रिफर्ड टू एज कार्व आउट. Are we exactly clear with that one? Additions and deletions made in the IFRS. Absolutely, Komal. But deletions made are referred to as carve out. And guys, additions made. अब हमने सोचा कि भाई हम एक थोड़ी सी नई lines add कर देते हैं. So let's say we decided that we added this line. We added this line. And when we added this line, guys, this was referred to as carve in. When this is referred to as carve in. So अगर तो मुझे कोई बोले ना कि फॉर्मूला बनाओ तो मैं तो क्या बोलता हूँ पता है गाइज, एक फॉर्मूला बना देता हूँ मैं. IAS IFRS माइनस कार्व आउट हो जाता है गाइज, प्लस कार्व इन हो जाता है. तो गाइज हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है Ind AS. Are we exactly clear with that one? Tell me, did you understand this also very well? Are you guys catching this up very, very well?
और मैंने आपको पहले ही कहा था, दिस आर नॉट द रिविजन क्लासेस, दिस आर द फुल क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइस, है ना? टेल मी, क्लियर टिल हियर? आर यू रियली क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ carve in and carve out also now? What is carve in, what is carve out? बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हम कल चालू करेंगे, कल हम लोग चालू करेंगे सबसे पहला स्टैंडर्ड, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। बट बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, हमें एकदम एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या नहीं है, एंड हाउ डज इट वर्क। क्लैरिटी आ रही है? आई वॉन्ट पीपल हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, दे शुड अंडरस्टैंड दिस आर फुल बॉर्न लेक्चर्स। आ रहा है ये क्लैरिटी? टेल मी येस और नो। दर्पण इज सेइंग येस, यस सर, जयश्री, टू गुड। झकास बोलो यार। अपने क्लास का रूल बहुत सिंपल होता है, नहीं समझ में आए यू कैन ऑलवेज आस्क मी योर डाउट्स, प्लीज अपने कमेंट्स में डाउट्स पूछ लो मुझे। पर अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज झकास बोलो। चलो डन। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, दैट इज carve in and carve out ऑल्सो। गाइज आज का क्वेश्चन नंबर 5। नाउ व्हाट इज आज का क्वेश्चन नंबर 5? सो गाइज आज का क्वेश्चन नंबर 5 इज the benefits of Ind AS, and that's what I call it as, sir, the benefits of Ind AS. Guys, what is the benefit of Ind AS? Ind AS का benefits क्या है? SIR. Guys, S stands for same word, standardization. But this is not standardization, guys, at national level. Standardization, I would say, at global level. Guys, what are the benefits of accounting standards? The benefits of accounting standards were SDC. S stands for standardization, D stands for disclosure, and C stands for comparability. But they were all at national level. And now we are not talking about the national level, guys. We are talking about the international level. So advantages, guys, the सबसे पहला advantage आता है, Ind AS का सबसे पहला advantage आता है, that is standardization at global level. That now people will start preparing the financial statements which are standardized at global level, पूरे world level पे, guys. Simple. जगास है guys. Second one, point number 2. First one is standardization at a global level, and the second one comes to I. I stands for what, guys? I stands for international capital flow. इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। गाइज हमारे कंट्री में इतना फॉरेन पैसा आ रहा है अभी कि भाई जो भी फॉरेन पैसा डाल रहा है इंडियन कंपनीज में, दे विल डेफिनेटली डिमांड बेटर स्टैंडर्ड्स। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टेल मी येस और नो। You know, we have Reliance, they created an FPO, they took a lot of money from the outside world. Companies like Google, companies like Facebook, they invested into Reliance. Companies like Amco, they invested into Reliance. Are we exactly clear? So a lot of international capital money coming into India. And when a lot of international capital money comes into India, they demand higher standards. They demand higher systems. अगर आप वही लोकल लेवल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे और यू नो लोकल सिस्टम्स फॉलो करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सो यू नीड टू फॉलो इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। जकास है एकदम एकदम क्लियर। सो गाइज SIR स्टैंड्स फॉर first one standardization, but standardization not at national level, standardization at global level. Guys, the second one is known as international capital flow. International capital flow का मतलब है lot of international money is coming into India, and when this lot of international money is coming into India, guys, they will demand a greater thing. And guys, third thing is known as R. R का मतलब है regulatory requirements already complete हो जाती है. So regulatory requirements are already complete. Guys, now there are companies like you know listed companies and unlisted companies and all. Now they have to, guys, follow a lot of rules and regulations issued by SEBI, Securities and Exchange Board of India. Guys, they have lot of companies, organizations like CLB, Company Law Board, ये सब उन पे ध्यान दे रही है. बट गाइज जब हम पहले से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो ना, तो इनका ध्यान हम पे कम हो जाता है, बिकॉज उनको पता है कि अच्छा भाई ये है ना, तो ये तो बहुत करेक्ट होगा. अब ये अंडरस्टैंडिंग दैट, तो फिर हमें आगे इसे पुश ऑन करने की ज्यादा जरूरत नहीं. सो हेंस वी कॉल इट एज बेनिफिशियल टू द रेगुलेटर्स. So what are benefits of Ind AS, guys? Benefits of Ind AS are SIR. S stands for standardization. I stands for a lot of international
money comes into the picture, and that's why we have to follow the standards. And guys, then finally comes the regulatory requirements. That regulator के लिए ये बहुत 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 ही एक advantageous scenario बनेगा. This is my question number 5. Are we clear with that one? Too good. Guys, question number 6 है, पर वो मैं आज नहीं कराऊंगा. आज मैं question number 5 पे रहूंगा. कल मैं question number 6 complete कराऊंगा, और कल मैं AS1 से भी चालू करूंगा. That is disclosure of accounting policies. Are we clear with that one? I'll do that also. But guys, आज के हमारे 5 question नहीं, आज के हमारे बहुत सारे question और उसका एक छोटा सा revision. गाइस, पहले तो AS के 7 क्वेश्चन और उसके बाद Ind AS के 5 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए. सो फाइन ट्यून एकदम फटाफट से मेरे साथ आंसर्स देना चालू कर दीजिए. गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, adequacy and reliability. What are accounting standards? They are written documents. They will give you policies, they'll give you procedures, they'll give you framework, they'll give you rules, they'll give you regulations that we have to follow in preparation and presentation of financial statements. This kind of policy documents are issued by expert body. They ensure the transparency, the consistency, the comparability, the reliability, and the adequacy. What does accounting standard deal with? Accounting standard deals with RMPD, recognition, measurement, presentation, and disclosure. What is accounting standard setting process? ICAI ने एक सब कमेटी बनाया जिसका नाम है ASB, that is Accounting Standard Board. It was set up in the year 1977, and they set up the standards. They first identify the area, then they make a study group, then they make a draft, then they collect the comments and the views, then they make an exposure draft, collect the comments and the views, then they modify the standard, and finally they issue the standard. Once the standard is issued, it can still be modified, it can still be revised. Next one, what are advantages of accounting standard? SDC, standardization, disclosure requirements, and comparability. What are disadvantages of accounting standard? The disadvantages of accounting standards are DR, debit, that is the difficulty in making a choice, and R is restrictions. What are the list of accounting standards? Guys, there are 23 standards that I'll do with me, but I'll start with remembering those standards every day. So कल से ये हमारा kind of हनुमान कीर्तन चालू हो जाएगा. So AS1, disclosure of accounting policy. AS2, inventory valuation. AS3, cash flow statement. AS4, contingencies and events occurring after the balance sheet date. AS5, net profit or loss for the period, prior period item, and changes in accounting policies. Guys, this is AS1 to AS7. Guys, next one, chapter number 2, we went to what is introduction to Ind AS. Why we require Ind AS? We require Ind AS because there's a globalization, there is a lot of liberalization, so we need to adopt the global standards. Did we adopt IFRS? No, we did not adopt the IFRS because सारी चीज़ें adopt नहीं कर लेनी चाहिए उनके कल्चर की, अपनी चीज़ों को रखना चाहिए, उनकी अच्छी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए. उनका पास्ता कॉपी कर लिया, उनका पिज़्ज़ा कॉपी कर लिया, उनकी खाने की स्टाइल कॉपी कर ली, बट गाइज उनका रहन सहन हमने कॉपी नहीं किया. और वो लोग वीक में एक ही बार खाना बनाते हैं, हम वीक में एक बार खाना बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे, हम रोज खाना बनाएंगे. वी रिक्वायर द हॉट फूड. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट. सो यू कांट कॉपी द एंटायर वेस्टर्न कल्चर. So we did not copy the entire Western culture, and that's why we issued our own international level standards, and they are known as Ind AS. If somebody tells you what are Ind AS, we call them, they are internationally converged standards, IFRS converged standards, again issued by ASB of ICI. What are international standards, sir? International standards were they were prepared from the year 1973. And 1973, guys, there was a committee which was known as IASE, that is International Accounting Standards Setting Committee, and they issued IAS, that is International Accounting Standards, and they also issued SIC, that is Standard Interpretation Committee. But in the year 2001, the name of IASE was changed to IASB. IASB was now known as International Accounting Standard Board, and guys, they started issuing IFRS, that is International Financial Reporting Standards, and they also started issuing IFRIC, that is International Financial Reporting Interpretation Committee. Guys, what is Carve-in and carve-out? Carve-in is new text added to IFRS. Carve-out is the old text deducted, and we created Ind AS. What are benefits of Ind AS? Benefits of Ind AS, guys, is SIR, sir, that is standardization, international capital flow, and last one is benefits to the regulators. I hope you are very, 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 very clear. काफ़ी है आज के लिए. जकास गाइस, कल क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टू Ind AS, एंड कल से हम लोग Ind AS नहीं AS1, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी भी चालू कर देंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. गाइज, ये सारे ही नोट्स आपके लेक्चर के नीचे मिल जाएंगे आपको. आई विल इंश्योर कि हर एक लेक्चर के नीचे आपको नोट्स मिल जाए, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड. थैंक यू गाइज, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टेक केयर.